welcome everyone to yet another episode of Bhai, Chara, where we discuss issues of men and Bradran, the things that are important to us. हम आज का जो मौजू है वो हम कवर करना चाह रहे हैं अट्रैक्शन के ऊपर. What is attraction? What makes somebody else attractive to us? Is it just physical? Is it more than that? Um, the last episode I think was a very important episode for us क्योंकि उसमें हम infidelity की बात कर रहे थे और उसके अंदर I think it wasn't just the feedback that we received which was very powerful and very meaningful but कि हम लोग के अपने जो उसके ऊपर discussion की थी we found that very engaging as well. I think हम सारों ने कुछ बहुत उसके अंदर interesting points है, so do check that out if you haven't done so before. But one of the things जो हम उस episode में, actually not one of the things, but one of the main things we wanted to highlight in that episode was कि infidelity or perhaps the desire for promiscuity ये एक natural चीज है सारों में, not just men but also women. But how you address that, how you handle that, understand it is crucial. तो उसी को थोड़ा सा हम I think इस episode में expand करना चाहेंगे by looking at one specific aspect of it, which is attraction. What makes somebody attractive? What, is attraction just physical? Is it more than that? So, इसके लिए जो है, then I will throw it to the floor. कि आप लोगों का क्या ख्याल है कि, considering कि हम लोगों ने पिछले episode पे ये चीज़ थोड़ी सी cover की थी कि, it is it's an inclination towards being towards being attracted to other people as well is something natural. So वही मैं I think point कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग we all agreed that that is something that's natural. क्या ख्याल है? अच्छा, I want to discuss जो हमारी शुरू में ये बात हुई थी कि whereas this episode I think on an average कोई 4-5 हजार इसके views थे, different हमने जो snippets लगाए थे, but despite it going so widely एक impression ही आता है कि इस टॉपिक के बारे में बात करने से भी people were feeling that infidelity is being promoted या infidelity is being justified, और it's almost like एक ममानियत है कि इस टॉपिक पे बात क्यों की जा रही है और बात नहीं करनी. So that was my observation that एक तरफ एक बड़ा पैराडॉक्स है कि बहुत लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इतने सारे व्यूज हैं इसके, but at the other end it seems like there's also some sort of a prohibition around this. So what do you guys think? प्रोहिबिशन वैसे क्यों है? Why do you think that is? Why is it such a difficult topic? इसके ऊपर जो है वो बात ही करना जो है ना वो बस ये यूजुअली हम टॉपिक्स देखते हैं ना उस पर लिखा होता है TW ट्रिगर वार्निंग. वो ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रिगर वार्निंग वाली जो है चीज है जिसके ऊपर अगर कोई बात करने की भी कोशिश करेंगे तो उसको जो है ना वो दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज शट डाउन. वो देयर आर रीजंस फॉर दिस एंड व्हिच आई हैव अंडरस्टूड इज कि at least one perspective is कि if you don't talk about it then it doesn't exist. फिर ये और इसका एक ही जो है ना वो there is no other outcome of this. If you are cheating then you are completely wrong and you should be crucified. And ये बात हमने last episode में भी की थी कि we understand from the perspective कि the person who's been cheated on उसके ऊपर जो गुजरती है and justified, unwarranted in some ways and justified कि वो how they feel when they are cheated on. So but when you come across or you process through that shock and grief, I think it's more important to understand कि why this happened in the first place. What made your partner be attracted towards somebody else in the first place? यानी कि ये बात आई ही क्यों? I think उस सवाल को अगर हम थोड़ा सा अगर हम खोल लें इस एपिसोड के अंदर, if somebody would like to add in and I'll add in later, how it got to that particular point. वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किए थे लेकिन we can sort of open that up अगर किसी और का इसके ऊपर कोई पॉइंट है. मेरी इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है that a lot of comments, and especially comments where someone was saying that they found the content very difficult,
were usually coming from women, whereas अगर मैं after that episode especially I was just thinking to myself, which is I was literally thinking कि पिछले एक साल में 2 सालों में the clients who I've worked with who have disclosed about infidelity in their relationships, I could see that the proportion of women who've disclosed that is far more than men who've disclosed that. And even after this episode, there were at least 4 or 5 women who sort of reached out as a direct message to me, and they discussed that we are in a situation, in some sort of a situation which is where we're grateful that someone is at least talking about that, and it's not a simple matter. It's a very very complicated situation, and we're glad that this conversation is taking place. So somehow मुझे वो फील हुआ कि इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जेंडर्ड एलिमेंट है कि जो ज्यादा एक रिएक्शन आ रहा है. Apparently it might be from women. The disclosure is also a lot from women, whereas the men who are generally seen as perpetrators, there wasn't a lot of engagement from men. I can't recall if there was even a single man who commented on this, or yeah, mujhe at least there was no one who directly got in touch with me, a man who disclosed about this. So that's just an observation. अच्छा, I got some feedback from my male friends and followers. तो मेरा ख्याल है कि जो जनरल मोस्ट ऑफ देम वर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट. ठीक है, वो एक जनरल एक हमारा जो स्पेशली पाकिस्तानी मर्दों का एक वो जेनेरिक बिहेवियर होता है ना इस तरह के मामला पे कि उसको इग्नोर करते हैं. अच्छा, ये वो तो वो ज़्यादातर ने कमेंट्स दिए हैं. कुछ ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. सम वर एबल टू कनेक्टेड, समवन कुछ कह रहे थे कि जी मजाक में उसको टाल दिया. तो आई हैड सम फीडबैक्स, बट वो आई थिंक इतने सीरियस नहीं थे कि उस टॉपिक को उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस लिया हो. सो दिस वो जो आप अपना एक वो जनरलाइजेशन कर रहे हैं उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि शायद मेन आर नॉट वेरी सीरियस टू टेक पार्ट इन दिस डिस्कशन. प्रॉब्ली इसका अफेक्ट जो हमारी डिस्कशन थी उसके ऑन द उस साइड पे जिस पे वो जो विक्टिम साइड है उस पे ज़्यादा खवातीन थी, इसलिए दैट्स व्हाई मे बी दे वर गेटिंग ट्रिगर्ड एंड दे वर फीलिंग विक्टिमाइज्ड कि ये लोग इस चीज़ को. आई थिंक वो जो उमर भी कह रहे हैं कि इस चीज़ की डिस्कशन ना होना, उसका एक हमारी सोसाइटी में एक ये भी किसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो उसका एक पहला इंप्रेशन ये आता है कि शायद हम उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आई थिंक हम उस डिस्कशन को तो हम नॉर्मलाइज, आई पर्सनली आई थिंक हर किस्म की डिस्कशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए. हम उस एक्टिविटी को या उस एक्शन को शायद हम नॉर्मलाइज करने की वी आर नॉट एडवोकेटिंग because it's natural tendency to get attracted to every woman out. We are not saying everyone should start doing something about it. लेकिन अगर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो if they discuss, तो maybe उस discussion से maybe we can reach to some solutions or some workarounds. कि अच्छा जी, अगर आप for example अभी जैसे अभी attraction की हम बात कर रहे हैं, if there is someone I'm more attracted to more than my own partner, तो उस डिस्कशन से हो सकता है देयर इज समथिंग मिसिंग इन माय एग्जिस्टिंग लाइफ जो मेरे पार्टनर में मिसिंग है. कैन बी एनीथिंग, कैन बी इमोशनल, फिजिकल, समटाइम्स इट्स फाइनेंशियल एज वेल. कुछ लोग पैसों से अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ये पैसे वाली लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. तो आप वो डिस्कस करेंगे तो शायद उसका कोई सोल्यूशन भी निकला है, बजाय कि आप 6 महीने के बाद बता रहे हैं कि जी वो क्योंकि जिम जाती थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद थी, तुम भी चले जाती. इस तरह की कोई आप 6 महीने के बाद बता रहे हैं तो 6 महीने में तो आपको पता है काफ़ी बॉडी शॉडी बन चुकी होती है, तो ज़रा वो कैचअप करना ज़रा मुश्किल होता है. तो इस तरह की आई थिंक डिस्कशंस आर ऑलवेज, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज, द मोर यू कम्युनिकेट इट्स लेस. जितना भी आप कम्युनिकेट करें, डिस्कशन इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आई माई सेल्फ इज आई एम नॉट अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, लेकिन मैंने रियलाइज यही किया कि अगर आपने टाइम पे कोई चीज़ डिस्कस कर ली हो तो उसका फ़ायदा ही होता है. बट अगेन एकदम अगर मुझे, जैसे हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशंस की हैं उसका हमें एकदम फीडबैक ये आया कि जी आप लोग क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीटिंग, आदमी तो होती चीटिंग है और ये और वो सारा, तो एकदम आई स्टॉप डिस्कसिंग. ठीक है, तो अभी तो मैंने एक मुझे रूम मिला था जिसमें डिस्कशन स्टार्ट हुई है, तो अभी हो सकता है मैंने अभी जो असली बातें हैं जो मेरे
जो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ उसमें, जो आप घर में भी हम जब कोई बात करते हैं पहले हम जनरलाइज करते हैं जी आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, ये हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वी कम टू द पॉइंट। लेकिन अगर शुरू में ही मुझे स्नप कर दिया जाएगा कि जी ये किस किस्म की फजूल बातचीत हो रही है कि डिस्कशन घर में करने वाली है, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा। तो आई थिंक दिस ये जो गेटवे ऑफ कम्युनिकेशन है ये रुकना नहीं चाहिए। अब कैसे जाहिर है वी मोस्ट ऑफ अस आर नॉट ट्रेन टू कम्युनिकेट सच थिंग्स, हमने पहले भी डिस्कशन की है। लेकिन जब तक हम ये स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम भी ट्रेन नहीं होंगे, बोलने वाला भी ट्रेन नहीं होगा, सुनने वाला भी ट्रेन नहीं होगा, उस पर रिएक्ट कैसे करना है वो भी ट्रेन नहीं होगा। तो आई थिंक दिस शुड कीप गोइंग ऑन कि आप हम भी और दूसरे लोग भी डिस्कशंस करें। ट्रिगर होना भी नेचुरल है। अगर चीटिंग करने की डिज़ायर आना नेचुरल है तो उसके ऊपर अग्रीव पार्टी का रिएक्शन करना भी नेचुरल है। तो वो हमने भी उसको उसी तरीके से लेना है कि अब इसका अच्छा अगला नाराज हुआ है तो उसका कैसे जवाब देना। नहीं, मेरा ख्याल है ये बड़े इम्पोर्टेंट दोनों उमर आपने भी जो कहा, आप भी जो कह रहे हैं कि एक मेरा ख्याल है हमारे कल्चर का मूड मिजाज भी ये है कि अच्छाई की बात की जाए, बुराई की बात की ना जाए, या बेफजूल बात क्या जरूरी है, या बड़ों के सामने ये बात नहीं करनी। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स अराउंड कॉन्वर्सेशंस के क्या टॉपिक ठीक है, सेक्स के बारे में बात नहीं करनी, या सेक्स के बारे में अगर बात करनी है औरत औरत से कर सकती है, मर्द मर्द से करेगा। आई मीन देयर आर सो मेनी रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, और उसमें मेरा ख्याल है एक ये है जिसमें आई थिंक what is very missing is that we shut down the conversation instead of disagreeing with the person कि मेरा इस पे व्यू पॉइंट फर्क है, instead of saying कि आपने जो बात की इनफिडेलिटी की, मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर्स नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। instead of that it is that men are bad, या ये गलत लोगों का, गलत बुरे औरतों का या बुरे मर्दों का, या जिसकी तरबियत ठीक नहीं है, जिनकी लो लेवल है, या उनके ये काम है। अगर आपकी तरबियत ठीक है, या ये इफ यू हैव इंटेग्रिटी, तो फिर आप में नहीं होगा। वो जो हम कैरेक्टर पे फिर आ जाते हैं कि ये खराबी है, दिस इज अ बैडनेस इन अ पर्सन, इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद दैट व्हिच इज दैट आई हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑन दैट एंड डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। वो एटलीस्ट इस टॉपिक में मुझे फील हुआ है कि वो एक कॉम्प्लेक्सिटी होल्ड कर नहीं की जाती, इंस्टेड वो एक बहुत इंटेंसिटी पैदा हो जाती है जिसमें फिर जनरली पीपल वांट टू सिंप्लीफाई द कॉन्वर्सेशन कि ये गलत है, ये सही है, या जो गलत बात है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, या आप अगर करें तो फिर आप भी गलत करें, आप उसमें यूर टेकिंग पार्ट, यूर complicit in that then. So इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, and I think Umar, we, like all of us, said this repeatedly in the previous conversation, कि in no way are we saying, number one, कि infidelity is okay. In no way did we endorse it, and I don't think we said कि cheating is a natural phenomena either. We said it exists, it is tabooed, it is a problem. I think जो चीज हम सारों ने acknowledge की थी कि attraction to somebody else, you know, there's क्या कहते हैं, being attracted to somebody and there's actually acting upon it. You know, वो कौन सा पॉइंट आता है जिस पॉइंट के बाद मतलब कि आपकी अपनी रिलेशनशिप में कुछ मसला चल रहा है, या आपकी इतनी जहनीत है, या आपकी वैल्यूज हैं कि आप उसके बाद जो है जाके एक्चुअली यू एक्ट अपॉन इट, you actually act upon, you know, being engaging in promiscuous relationships despite having a partner. So I think हम लोग पिछले वाले में भी ये एक्सप्लोर कर रहे थे, and we were, I think हम ये क्लैरिफाई करवाना चाह रहे थे कि being attracted to somebody else is always natural. और आई थिंक वो टैबू उस चीज पे आता है कि ये फिर आप लोग क्यों कर रहे हैं। बात वो है ना, आई थिंक जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, मे बी दे डिडंट सी द होल वीडियो, दे प्रोबब्ली जस्ट कमेंटेड बेस्ड ऑन द स्निपेट्स, एंड जैसे राणा साहब ने बताया कि लोग उन चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं, एंड एब्सोल्युटली राइट, लोगों को ट्रिगर होना भी चाहिए, स्पेशली इफ दे विन थ्रू दैट, यू नो। और that's the exact point that we're having this discussion, कि हम लोग ये क्लैरिफाई करवाना चाह रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। इसे टैबू अगर आप मतलब कि ट्रिगर होके बिल्कुल खामोश कर देंगे तो वो मसला कहीं हल नहीं होगा, वो बल्कि ज्यादा बिगड़ता रहेगा। लोग उसे बुरा भला कहते रहेंगे, वो खामोशी से होता रहेगा। क्या कहते हैं, 50% दुनिया में अगर इनफिडेलिटी हो रही है तो पाकिस्तान में आराम से 80% अनडॉक्यूमेंटेड होती है। ठीक है, सो आई we're saying कि this is natural. You know, I think what we are trying to, the reason we're expanding on that is because we're trying to say कि देखें, there are reasons that it happens, और हम सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी इस चीज का थोड़ा सा आइडिया हो कि ये ठीक है। आप एक दफा जब एक्सेप्ट कर लेंगे ये चीजें होती हैं, तो फिर आप फिर मतलब कि थोड़े से अपने आप को इनलाइटन करके ये सोचें ये क्यों हो रही है, फिर आपको इसके हल मिलते हैं, rather than just getting triggered and saying कि ये गलत है, you guys are endorsing it, you know, knee jerk reactions.
obviously they're not helpful. And I think for us to actually even engage in that, to even acknowledge it, is also counterproductive to this discussion. क्योंकि हम लोग इधर इसलिए नहीं आए कि लोग अगर हमें कुछ कहेंगे कि आप लोग ही को बात कर रहे हैं और हम उस चीज से पीछे हो जाए. No, that's not the point of this forum. हम लोग का मकसद इधर सिर्फ ये है कि हम लोग जो चीजें हम लोग को नेचुरली और ऑथेंटिकली और ऑनेस्टली हम लोग फील होती है वो हम इस फोरम में आके डिस्कस करें. So I I'll think add to वही that coming. कि जो स्टेरियोटाइप फिर बन जाता है ना कि औरतें होती इमोशनल हैं, सो मैन माइट फील कि उनसे तो बात ही करना फजूल है, या एक औरत का पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मर्द तो होते ही दिमागी तौर पे व्हाटएवर उनका तो दिमाग ही गंदा है, गंदा ही सोचेंगे. सो देन वो जो एक कॉन्वर्सेशन की स्पेस तुम कह रहे हो, फिर वो दो लोगों के बीच में नहीं, वो एक फिर कंपेटिटिव स्पेस है, बिल्कुल एक जजमेंटल स्पेस है कि वो तो समझ ही नहीं Exactly. सकते. सो you will make sure you say that there's something wrong with their character, or a man might say that oh उनमें तो एक emotional capacity सुनने की है ही नहीं, तो फिर उन्हें बताने की जरूरत नहीं, हम conversation भी क्यों करें. So I entirely agree that especially for us, that is where we started our conversations, not only on this topic but all other topics, which is ke this is an opportunity both for men to sort of see that हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं, these are conversations to be had, and for women also to see that actually men are not unfeeling creatures, they are thinking, feeling, observing, and what might it look like अगर those conversations are possible with them. Yep. जब ये अट्रैक्शन की जो बात हो रही थी, उमर साहब ने जो कहा कि ये अट्रैक्शन इज नॉट ओनली फिजिकल, तो और डिफरेंट टाइप ऑफ अट्रैक्शंस भी होती हैं, पॉसिबल हैं. तो उस पर मेरे जहन में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था. आई थिंक हमारे रिलीजन्स जो डिफरेंट हैं, कल्चर्स में भी इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए काफ़ी बाउंड्रीज सेट हुई हुई हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप फिजिकल आदमी औरत एक दूसरे से फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी कुछ बाउंड्री सेटिंग है. मैं ये सोच रहा था कि जो नॉन फिजिकल चीज़ें हैं उससे भी बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं. ये जैसे आजकल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड भी चल रहा है, साइकोसेक्सुअल. तो जो आपकी अगर आप किसी के इंटेलेक्ट से अट्रैक्ट होते हैं, आप किसी की आवाज़ से अट्रैक्ट होते हैं, आप किसी के प्रोड्यूस्ड आर्टिफैक्ट से अट्रैक्ट होते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो आपने कोई चीज़ बनाई है उससे अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे स्टार्ट admiring you without knowing how you look like, both male female. तो उस तरह की चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं? फिजिकली तो बड़ा आसान है, पर्दा कर लिया, बंद कर दिया, मेल फीमेल बाथरूम से अलग कर दिया, इस तरह की तो बहुत सी चीज़ें आपने कर ली हुई ऑलरेडी ह्यूमैनिटी ने. लेकिन जो इस तरह की जो आपकी चीज़ें हैं जो जिसका डायरेक्ट आपके फिजिकल प्रेजेंस या फिजिकल आउटलुक के साथ ताल्लुक नहीं है, बट दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, उससे अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हाउ विल यू सेव योरसेल्फ और प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट? दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. आपके सामने रेडियो पे, आई नो गर्ल्स मोर देन बॉयज, जो आपके आरजेज होते हैं रेडियो, जो टीवी पे एफएम के रात को 2 बजे के बाद शेर व शायरी कर रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन लव विद देम. अब वो सिर्फ एक आवाज आपके घर में आ रही है, तो चलें इसको भी आपने रोक लिया कि कोई आपके घर में किसी आदमी की, औरत की आवाज नहीं आनी चाहिए. बट around you there are so many things that have been created by someone you can get attracted to. तो फिजिकल से तो आप किसी कोई ना कोई आप हल निकाल लेंगे उसका. अगर आई एम अज्यूमिंग अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें इस अट्रैक्शन से अपने आप को कैसे बचाना है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी गेट अट्रैक्टेड टू, जिससे बचना बड़ा मुश्किल है. सिर्फ आपने कंट्रोल करना है, मैनेज करना है तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दे राना साहब इस क्वेश्चन पे. आपका क्या मुराद है इस सवाल से कि अट्रैक्शन से बचाना चाहिए? अच्छा, इन प्रिंसिपल समटाइम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं ज़्यादा रिलीजन को अंदर लाना नहीं चाहता, लेकिन अगर फिजिकल अट्रैक्शन आदमी औरत के बीच में है, ठीक है, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज नॉट एवरीवन इज स्ट्रांग, और हर किसी की अपनी बाउंड्रीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती. तो उसको वहीं पे रोकने के लिए बहुत से आपने ब्लॉकर्स लगा दिए होते हैं कि जी आप देखें मत, या पर्दा करें, या बहुत सारी आपको लगता है कि आप बहक जाएंगे तो आप ऐसी जगहों पे मत जाएं जहाँ पे आपको बहुत सी खवातीन मिल रही है, नजर आ रही हैं. तो इन चीज़ों से तो आप जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो आपकी आंखों के थ्रू आपको अट्रैक्ट करती है, आपको बहका सकती है, उससे तो आप बच सकते हैं, किसी टू फॉल इन लव विद समवन और टू गेट अट्रैक्टेड टू समवन. लेकिन जो चीज़ें इनडायरेक्टली किसी के साथ अटैच्ड हैं और आप यू फॉल इन लव विद द आर्टिफैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय समवन
जिसको आपने देखा वही नहीं है, उस अट्रैक्शन से आप कैसे बच सकते हैं? वो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जस्ट अ पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग कि हम इस वक्त हल निकालें उसका, वैसे कह रहा हूँ कि आप इतने देर सो मच टाइप्स ऑफ अट्रैक्शंस कि आप हर अट्रैक्शंस को मैनेज करना माइट नॉट बी पॉसिबल अनलेस कि आप का इंटरनल एक विल है, अपना एक रिजॉल्व है कि जी मैंने किसी से बट अगेन मेन क्वेश्चन फिर से वही आता है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, तो क्या अट्रैक्ट होना गलत है? एज यू सेड इट्स नेचुरल अट्रैक्ट, क्या हमने कंट्रोल करना है अपने को किसी फॉर्म में किसी से अट्रैक्ट, स्वाय सिर्फ एक बंदे के या मेरे केस में ज्यादा लोगों के, तो आपने क्या अपने आप को रोकना है अट्रैक्ट होने से? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज देन इफ जो यूजुअल अजम्पशन होती है वो यही होती है कि अट्रैक्शन जब भी बात हो रही है, और ये पिछली एपिसोड का जो रिएक्शन भी था, मोस्ट पीपल अज्यूम्ड दैट अट्रैक्शन का मतलब वी वर रेफरिंग टू सेक्स, दैट men are attracted to women because they want sex and variety, and एग्जैक्टली। whereas actually if we are talking about attraction, apart from just the sensory कि खुशबू से आप attract हो, किसी की आवाज से हो, या visually what you see is pleasing for you, those aren't the only reasons why people may have may be attracted to someone or have an affair with someone. A lot of times they might be attracted to someone due to their power, or they might be attracted to someone because of the work they do, or they might be attracted to someone because of a mutual interest they have. For example, just दो लोगों को एक let's say poetry का interest है, या उनके music के tastes मिलते हैं, and that might be what makes them feel very attached to each other in some way. So that would be the larger question then, that if, let's say, in a relationship, is it just that physical attraction that we're preventing? कि अगर एक relationship में there are other factors such as आपके partner के साथ आपकी attachment जो है, emotional attachment जो है, आपकी जो उनके साथ understanding है, level of respect है, आपकी जो उनके साथ एक intellectual compatibility है, अगर वो सारी चीजों, do they prevent the physical attraction, or do they sort of act as a check on the physical attraction towards other people, which is, like we're saying, inevitable? It's natural to be attracted to whatever, a voice, a sound, a vision of something. So how are you guys looking at this? इसकी एक बड़ी बेहुदा सी एक मिसाल है कि पॉर्न, ठीक है, Hmm. बहुत से बहुत सी बीवियां अपने शोहरों से इस बात पे बड़ी शदीद नाराज हो जाती हैं कि वो पॉर्न क्यों देखते हैं। Hmm. तो अगर मैं उसको डायसेक्ट करूं तो बेसिकली वो आदमी की जो अट्रैक्शन, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समथिंग जो प्रॉब्ली उसको शायद कभी नहीं मिलेगी जिंदगी में, ना मिली होगी शायद इसलिए देख रहा है। तो इसमें अगर वो नाराज हो रही हैं तो दैट मीन्स दे आर थिंकिंग अ लॉट मोर देन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर। इट्स नॉट जस्ट अट्रैक्शन दैट व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। तो अट्रैक्शन कैन कॉज टू जेलसी एज वेल, सेम फॉर मेन एज वेल। अगर पावर की आपने बात की है, तो मेरी बीवी को या पार्टनर को एक बंदा बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो दैट कैन ट्रांसलेट इनटू जेलसी कि अच्छा यार मेरे पास इतनी पावर होती तो मेरी रैंकिंग इससे हायर होती। So I think attraction sometimes leads to jealousy, which can be cause of the problems. पॉन्ड की बात करनी थी वो मैंने कर दिया, बाकी आप लोग को पता उमर से पूछते हैं, उमर को पता है काफी। मैं वही सोच रहा था, मैं Our लास्ट टाइम भी इसी resident बात पे ऐसा था, पॉर्न की बात कर दी और फिर मेरे को डायरेक्ट हो गई है। our resident porn expert जी लतीफ साहब। एब्सोल्युटली। आई थिंक राणा साहब का भी इसमें पॉइंट, जो पहले उनका जो पार्ट था वो इट वाज अ क्वेश्चन, बट क्वेश्चन मुझे लगा था क्वेश्चन इन अ वे व्हिच इज आंसरिंग अ क्वेश्चन कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी भी बंदे से या बंदी से जो है ऑफ द ऑपोजिट सेक्स ना अट्रैक्ट हो। सो यू कांट एक्चुअली स्टॉप दैट फिजिकली, आप स्टॉप कर सकते हैं, और स्टॉप भी करना रिस्ट्रिक्टिव होना होता है। जितना आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड, वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट उसका एक हो सकता है रिस्ट्रिक्शन का, बट the longer the time passes, it becomes more pervasive and more difficult to be able to restrict yourself from that particular person. And अब मैं ये बात जो सोच रहा हूँ कि जैसे अट्रैक्शन टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर पर्सन, जिस तरह राणा साहब ने कहा था कि आरजे जो 2 बजे होते हैं उनकी तरफ बड़ी होती हैं, इफ दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, डज दैट मीन कि दैट्स चीटिंग? इसमें थोड़ा सा पॉइंट जो है लास्ट एपिसोड का है, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, वो चीटिंग के एम्बिट में जो है वो क्या आता है कि नहीं आता है, एंड would that lead to your partner being jealous?
और उसको उल्टा भी कर लें, अगर जो आफ्टरनून वाले जो हैं वो चलें men listening to certain RJs or DJs, तो वो it's natural to be able to, and men in certain capacities we like specific voices, a specific tone of voice. वो कुछ भी हो सकता है कि it could be, it doesn't have to be noisy or shrill, but it can be sort of smooth and husky, or it's done in a way which is attractive to us, but that doesn't necessarily mean that we are uh, going to do something about it. और porn का भी example वही लें, I can speak for a friend of mine, लेकिन ये है कि it doesn't mean कि if you're attracted towards a certain porn type or porn star, that means कि we are willing to go out of our ways to chase them down and engage in particular activities with these particular people or females. तो attraction तो I think attraction is natural, and उसको रोकना जो है, I think it's a very diminishing sort of or restrictive concept कि इसको जो है वो किसी तरीके से हर चीज को आप रोक नहीं सकते, मतलब कि आप गाइड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, बट अट्रैक्शन को आप कैसे रोक सकते हैं, और रोकना भी क्यों है? इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ अस, वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर पीपल, एंड दैट्स ओके. The thing is कि we can understand कि if it goes beyond attraction, where you actually approach this particular person and engage in something which you shouldn't be, and we've talked about this before, so then it becomes difficult. So which begs the question कि in continuation कि यार attractive और क्या चीज हो सकती है? एक तो ये है कि किसी की बनाई हुई कोई चीज हो सकती है, किसी की आवाज हो सकती है. पावर का वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि what would make a man attracted towards somebody in power. इसमें पावर डायनामिक क्या हो सकता है? ये मेरे हिसाब से मेरा एक सवाल है. आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, राणा सर ने भी रेज किया, तो उसका क्या हो सकता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? So, for example, it's a very common thing that a man who may be married to someone that they didn't want to marry, parents ने कहा कि इन शादी कर लो, and not so, let's say very traditional marriage where the purpose of that marriage was just to have children and that's what it is, and then they meet a colleague or someone who's very independent, who has their own money and does things their own way and whatever they want, and they don't want to marry and they're free to choose their partners. That might be a very, very attractive quality for them, that here is someone who here is someone who can make choices and do things जो कि ना मुझे अलाउ हुई, ना मेरे पार्टनर को अलाउ हुई, ना हम एक दूसरे को अलाउ करते हैं. But that concept might be very, very powerful for a person like this, that sense of independence. पावर के ऊपर अगर मैं कहूँ, आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक was something that most men who have gotten into relationships, जहाँ पे power dynamics आती है ना, there's two sorts of people I've come across. जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अल्फा समझते हैं ना, वो usually बहुत ही or at least they, मतलब कि there's I don't know, ये थोड़ा सा stereotype भी है, थोड़ा सा क्या कहते हैं cultural भी है, but जो बहुत ही ज्यादा अल्फा टाइप के होते हैं ना, उनका ज्यादातर होता है कि उन्हें थोड़ी सी सबमिसिव किस्म की औरतें चाहिए होती हैं. दे नीड समबडी जो वो खुद उसे ओवर पावर कर सके. देन यू हैव अदर टाइप्स ऑफ मेन हु वांट समबडी हु कैन बेसिकली कंट्रोल, जो थोड़ा सा आई गेस रिप्लेस कर लें उनकी माँ को इन अ वे के वो उन्हें उनका ख्याल भी रखें, उनके ऊपर थोड़ी सी अपनी पावर एक्सर्ट भी करें. But and then there's a very rare type of group जिसके अंदर वो चाहते हैं कि equal power sharing हो, ताकि दोनों एक साथ ग्रो करें. I mean ideally तो वही होना चाहिए. अब I can't give any specific examples of that, but I feel कि that's where the power dynamic comes in. I mean जो वही होता है कि I think आपको in terms of attraction जो power वाली बात है, उसमें I feel कि it also depends on कि आपके अपने क्या perspective है power के ऊपर. You go for usually partners who you feel can either enhance your power or basically they can offset a limitation in power that you have. जिस तरह अभी तुमने बात की है ना कि वो क्या कहते हैं, आप चाह रहे हो कि आपको इंडिपेंडेंस ज्यादा मिले एक औरत पे शादी करने से किसी का. वो इंसिडेंस मेरे फैमिली में ये था कि यू नो आई थिंक उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज आई थिंक जनरली बहुत ज्यादा मेट्रियार्कल ही होती हैं.
तो मुझे like growing up, as a child, despite the fact that I was a boy, I was like, भाई तुम लोग मेरे बात क्यों नहीं सुन रहे? बाकी खानदानों में तो like लड़कों की बात सुनी जाती, मर्दों को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बट आई फेल्ट लाइक आइसोलेटेड. और आई फील कि मेरी तब तक नहीं हुई थी, क्या कहते हैं, कोई लाइक आई वाजंट एक्चुअली एक्नॉलेज्ड until I got married, because वो तो अब तो शादी हो गई, अब तो बड़ा हो गया वगैरह. So I think maybe there's a that's where I mean there's it's a कि आप उसी चीज आपको बेसिकली गाइस करती है, where in terms of power जब भी आपका गैप होता है, maybe that's what you're getting attracted to. In terms of I think तुमने just going to go back to something that you said, attachment versus attraction. I think ये जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे ना कि देखिए, attraction, yes, it is natural. It is always going to happen, whether it's to a person, I mean, you can have attraction to somebody of the same sex despite being attracted to the opposite sex. The issue that comes there is actually acting upon it. So आप मतलब कि आपकी camaraderie होती है, if you are friends, आपके camaraderie होती है with soldiers, with sports players, with जैसे आप कह रहे थे artists you're attracted to. But why does मसला ये होता है ना कि जिस लोग जिस चीज के ऊपर issue बना लेते हैं, because the moment it becomes physical, that's not a religious thing, that's a natural human thing, I guess. At the moment, ठीक है, like we can talk to even to our spouses, we can talk about people we're attracted to, right? Unless वो आपका spouse insecure है या उसके कुछ ना कुछ hang-ups हैं from their past कि वो चीज से बहुत insecure होते हैं, you can say, yeah, I find that woman attractive, I find that man attractive. I'm not going to act upon it. I find that man attractive because not just for his aesthetics, but because he has a lot of wisdom. He's an excellent sports player. He exemplifies something that I aspire to. वो मेरे लिए attraction है. My wife can tell me that I find that man attractive because he's intelligent, he's got this that. अब मैं उसके अंदर threaten तो obviously हो सकता हूँ, but I know for a fact that the issue तब आएगा कि when that point where you actually act upon that attraction. Or if your partner acts upon it, that means there's something wrong with your relationship. लेकिन अगर आपकी अपनी relationship secure है, so the other person doesn't need to act upon that attraction. They can acknowledge the attraction, you can acknowledge it. लेकिन act जब देखिए, religiously भी, culturally भी, and humanly भी, it's like socially भी, issue always comes on कि when you act upon the attraction, when you actually, जिस तरह लतीफ बात कर रहा था, when you go beyond that stuff. I think that's where the issue is, and I think again we're looking at from that perspective. So what I found interesting was कि लतीफ साहब और राना साहब ने जो था ना, अपने सवाल के अंदर ही जवाब दे रहे थे. वो जो लतीफ ने बात की, because वो ये कि how do you avoid that attraction? But the question is, why would you avoid it? Because it is natural. Or yeah, I think and I think that's the whole crux of what I was trying to say. Well, it's natural, it's going to happen. और I think बात वो वहीं पे आती है कि until unless आप अपने partner के साथ ये चीजें openly communicate करें, acknowledge करें कि what attraction is, not to be threatened by it, you should be fine. But to completely become triggered by the fact that oh no, so somebody finds them attractive, that's going to be a problem. So then we're talking about at least two things here. एक ये है कि जो attraction है, the thought of that, the feeling of that, the sensation of that, the process of that, that is unavoidable. However, the acting of that is something that we are not only bringing under the discussion, but we're saying कि वो जो act out करना है वो prevent कैसे हो सकती है. और उसमें at least एक factor जो है वो quality of the relationship का आ सकता है. कि can the relationship contain that conversation? Can the relationship find solutions for that problem? Which then we are also talking about a very idealized relationship के जिन relationships में openly बात हो सके, reactivity ना हो, both ways. That for example, equally, how many men would be willing to listen to a woman say that मेरे काम पे मेरा बॉस है या co-worker है और I don't know, बहुत cool है वो बाइक चलाता है. How many men might be comfortable with that? No, especially if a man who might feel that अच्छा मैंने तो आज तक नहीं बाइक चलाई, या who might be very complexed about something, someone who's not sporty, or someone who's whatever. Again, if there's whatever a man might be insecure about their partner, just bringing in those very qualities that they find attractive in some other person, how may that be contained? How could that be contained in the relationship? Or the other way around, that let's say that for a man who
themselves may want their wife to look a certain way or to cover themselves a certain way, then they very hypocritically bring it up, which is that, oh, mere, I don't know, mere kaam pe ya mere workplace or something, I saw someone, mere gym mein, there's someone who doesn't cover up in this sort of way, and I'm very, very attracted to that. So, I mean, ये वाली conversations इस तरह की कितने relationships हैं जो which can meaningfully navigate these without that becoming a very reactive place. That's why मैं अक्सर कहता हूँ कि ये मैन वुमेन की डिबेट ही नहीं है, ये हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है. तो हमें रूट लेवल पे पहले ये जो थोड़ी सी ओपननेस, ओपन माइंडेडनेस लानी पड़ेगी. अदरवाइज ये हम लड़का लड़की की लड़ाइयों में सारी हमारी फंसे. रिसेंटली मैं मेट समवन, देयर वर फ्यू लेडीज आल्सो सिटिंग, तो वो मेरे से सवाल पूछा, जी व्हाट मैन वांट. मैं कहा तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला. हर बंदे की अपनी एक ख्वाहिश है, अपनी एक रिक्वायरमेंट, अपनी एक उसने अपनी एक प्रोजेक्शन बनाई हुई, उसको क्या चाहिए. तो ये व्हाट मेन वांट, व्हाट वुमेन वांट, व्हाट शुड दे डू, ये आई थिंक कल्चरली एक लेवल पे पहले हमें आना पड़ेगा एज ए ह्यूमन बीइंग कि कितना हम. आई एम नॉट सेइंग, आई एग्री टू यू व्हेन यू आर सेइंग कि कौन कौन से कितने कपल्स होंगे या रिलेशनशिप्स होंगे जो आदमी इतने इजीली ये सुन लें. आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ men saying in front of their wives के वो कितनी हॉट लड़की जा रही है, वो उसको ये देखो, उसको वो देखो. लेकिन not many men can actually digest this. मैं एक छोटी सी वाकया सुनाता हूँ. मैं एक दफ़ा अलफता में अंदर जा रहा था, एक स्टोर में मैं अंदर जा रहा था, तो एक बहुत खूबसूरत खातून भाई की तरफ आ रही थी. वो गॉट माई अटेंशन. तो मैं थोड़ी देर बाद में वो खातून के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था. तो वो खातून एकदम शी वाज गेटिंग आउट ऑफ द स्टोर एंड आई वाज गेटिंग गोइंग इनसाइड. तो एकदम वो जो रुकी है, और अच्छा मेरे आगे भी एक बड़ी खूबसूरत खातून जा रही थी, ठीक है. तो वो खातून रुकी, जो बाहर निकली तो रुकी है और मुड़ के वापस चलेगी. तो वो थोड़ा सा मुझे भी ऑड लगा. मैं कि वैसे मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा शायद मेरी वजह से बंदर जा रही है. तो उसके बेटे ने कहा जी मामा वापस जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा जी आपके बाबा को अंदर अकेले नहीं छोड़ सकते अब. तो दैट वाज बिकॉज कि एक और खूबसूरत खातून जो है वो अंदर जा रही थी. तो अब उनका आपस में रिलेशनशिप ऐसा था, वो आई डोंट नो, उसकी उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन इतनी थी कि उसको पता था कि मेरा जो शोहर अंदर है वो अंदर कोई गुल खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, या उसकी ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपीरियंसेस से कुछ भी था. बट उसके नॉलेज बेस के अंदर ये था कि जी मैंने अपने शोहर को एक इस तरह की हसीन खातून के साथ अकेले एक स्टोर में भी नहीं छोड़ना. तो ये बहुत से a lot of problems occur because of the type of relationship or attachment or the experiences we have with our spouse. तो वो और वो हो सकता है बंदा अब ठीक हो गया हो, हम लोग भी तो ठीक हो गए हैं. तो लेकिन वो उसका वो जो ट्रॉमा है वो उसकी बीवी के जहन में से, लाइफ में से इतनी जल्दी जाएगा नहीं. मैं इसके बारे में वैसे सोच रहा था. सॉरी बोले. स्टोरी छोटी थी लेकिन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. यही हमारी डिस्कशन भी आती है. व्हाट वाज, वो जो औरत थी वो किस बारे में परेशान थी कि मर्द एग्जैक्टली क्या करेगा. सिर्फ देखेगा, सिर्फ देखने की हद तक होएगा, या बात करेगा, या कोई इनअप्रोप्रिएट हरकत करेगा. अगर तीनों चीजों को देखें तो इसमें से आई थिंक जो इनअप्रोप्रिएट हरकत है वो तो चले समझ आती है. यू डोंट वांट दैट. If somebody has the capacity to do it, and it can be men and women, let's go with men in this particular case. अगर इनअप्रोप्रिएट है वो तो गलत है. लेकिन अगर इसमें जो पहला वाला पॉइंट है कि वो देखेगा, तो अगर आपके वापस अंदर जाने से वो नहीं देखता, तो किन किन मौकों पे जो है वो आप फिर रोकेंगे इनको देखने के, इफ दे आर एक्चुअली गोइंग टू लुक. तो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट एक ये आता है कि जी चलें जहां जहां हम है वहां तो हम इनको रोक सकते हैं ना, या आंखें दिखा सकते हैं, ये वी कैन स्टेयर एट आवर पार्टनर, मतलब वो जो इस तरह शेम करके जो आप वो कर सकते हैं, विच आई अंडरस्टैंड. ठीक है, प्रिंसिपली एक्टिंग ऑन इट, I can understand how wrong that can be perceived and how it feels. लेकिन जहां तक देखने की हद तक है and feeling attracted towards somebody, उसको आप कितना रोकेंगे, और उसको रोक और कितना आप रोक सकते हैं if that man is attracted towards. और शायद इसका एक चौथा सिनेरियो ये भी है कि शायद कुछ भी ना होता,
क्योंकि आपने एक बेस बना ली है कि वो इस तरह ही करते हैं. तो इट सीम्स लाइक समवॉट ऑफ एन एग्जैजरेटेड एग्जांपल एज वेल इसमें अगर देखा जाए कि अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि आपके सॉरी आप उसने कहा था कि अब आ गई हैं ये, दिमाग से भी निकल गया राणा साहब, वो कनेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, नहीं सो नहीं, तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था, उनके बेटे ने पूछा था कि आप वापस वापस जाना है अंदर. हाँ, तो तो औरत ने शी क्या जवाब सेड कि दिया फिर? आपके अब्बा को अकेले अब अंदर नहीं छोड़ सकते. अच्छा, अच्छा, तो ठीक है. सो शी वाज नॉट वेरी डायरेक्ट, लेकिन वो हाँ दैट्स हाँ ये इम्प्लाइड. जो है वो ठरकी हैं, तो बेटा हाँ और माँ की एक टीम बन गई कि हम दोनों जो है उधर हाँ छापा मारने के लिए जाते हैं. दैट्स आल्सो समथिंग दैट कैचेस माय अटेंशन इन दैट एक जो, लेट्स से दैट इफ दैट इज हु दैट मैन इज, एंड a lot of men and women who may just by visually scanning something find something appealing. एक तो हमने उस पे एक कैद लगाई है कि वो होना नहीं चाहिए, फिर दूसरी उस पे एक रिलेशनल कैद लगाई है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक शेमफुल कि आपका बच्चा है और अब आप बच्चे को भी साथ उसमें अटैच करो कि भाई you have to keep them under check. And a lot of times ऐसे ये होता है कि in a यस. scene where a father has been caught cheating या कोई information या कोई इस तरह की revelation हुई है, तो माँ जो है a lot of times will involve the children and say कि अपने बाप को देखो कितना बेशर्म है, या a lot of times people will even use that यार तुम्हारे तो बच्चे हैं या बच्चों वाले हो, ये क्यों तुमने किया. So that concept also exists, which is कि ये वाली जो चीज है, this is almost like an infantile thing to be attracted to someone or to even look at something. This is not something that belongs to people who have a family, or this is not something that belongs to after a certain age. Exactly. बच्चे हो तो बस ठीक है, उसके बाद नहीं होना चाहिए ये. इसका एक रिप्रकशन भी है. सॉरी, उमर ने बोलना था. नहीं इन्होंने बोला रिpercussion. मैं एक रिप्रकशन के बारे में सोच रहा था, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज कम अक्रॉस क्लाइंट वर्क. जब इस तरह आप बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं इन शेमिंग द पार्टनर, एंड it comes from mothers, I mean, where you involve the children, and what comes up in therapy is कि यार, what they sort of understand is कि, yeah, what they bring up is यार, how is this related to me? मैं इसके अंदर इन्वॉल्व कैसे हो गया, एंड मुझे क्यों इस्तेमाल किया गया इस चीज के लिए, विच वॉज बिटवीन देम. सो इन्वॉल्विंग देम इन, वही कहते हैं ना, प्रेजेंटिंग जो है, जो क्लाइंट्स आते हैं वो डिप्रेशन के साथ, ट्रॉमा के साथ, ये वो, बट व्हेन यू अनकवर द लेयर्स, ऐसा तो पता चलता है, एंड यू फाइंड आउट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग these important moments. तो ये वाली बात है, they remember कि how they were, ऐसे involved in something which was not there to be involved in. It was principally between their parents, and children were involved, and how they were affected because of it. तो आपकी इस चीज की वजह से वो बच्चों पे उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है. आप कोशिश ये करें कि आप शेम करें और बच्चों को जो है वो दिखाएं कि आपका पार्टनर जो है वो कितना अनफेथफुल है, या इतना घूरता है, या जो भी इसके इश्यूज हैं. ठीक है, वो प्रिंसिपली आई अंडरस्टैंड कि वो ठीक नहीं है, वी एग्री विद इट, बट वो उसका इफेक्ट जो दूसरा वाला है, वो आप उस चीज को निगेट कर रहे हैं, द इफेक्ट ऑन योर चिल्ड्रन, एंड हाउ इट अफेक्ट्स देम, एंड लीड्स देम टू अ पॉइंट वेयर इट बिकम्स डिफिकल्ट रिकंसाइलिंग देयर ओन इमोशंस, और फिर उनके इश्यूज जो है वो प्रॉप करते हैं. तो या, सो जस्ट वांट टू ऐड दैट, मेयर सर. It's very interesting. मुझे क्योंकि इसी पॉइंट पे आई थिंक मैं ये पूछ सकता हूँ कि बच्चों के लाइक जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है where ठीक है अट्रैक्शन है बट you are so suspicious or you know that your partner is so, I mean obviously कि आपको पता है कि वो इस किस्म की हरकत करता है, and I'm sure कि हर relationship complicated होती है और इतना आसान नहीं होता किसी को छोड़ना. But I mean, why would you then even continue in a relationship like that? I mean, because I have a very stupid response to this, which is कि देखो अगर if a woman is, एक तो ये है कि she has the tolerance or because of the kids that she goes through all of this, right? Then there's another alternative to it, which is कि maybe she is also like that. It's I know it's a horrible thing to say कि maybe because in this scenario हो सकता है कि वो वाकई बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सब्र कर रही थी और अपने बच्चों की वजह से अपने खानदान की वजह से जो भी सोशल प्रेशर्स हैं उसकी वजह से she was tolerating this and she was trying to be as accommodate or not accommodating, but वो basically उस बंदे की जो भी उसके, आई थिंक हम थोड़ा presumptuous हो रहे हैं इस एग्जांपल के साथ,
लेकिन इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि इस किस्म की चीजें, लाइक व्हाई वुड यू इवन कंटिन्यू इन अ रिलेशनशिप लाइक दैट, जहाँ पे मतलब कि आपके बच्चे और ये लोग अफेक्ट हो रहे हैं इस तरह. I just find that fascinating, and I know there's, again, like I said before, it's always complicated. इतना आसान नहीं होता किसी बंदे को कहना तुम तो हो ही इस किस्म की ठरकी, तो मैं तुम्हें छोड़ दी हूँ. इतना आसान नहीं होता, I get that. But why would you continue in something like that? Then I feel कि हो सकता है कि she's also like that, because I don't know, आई maybe थिंक that's two scenarios है. मेरा ख्याल है कि बड़ा आपका हार्ड स्टांस है इसके ऊपर. एक रिलेशनशिप है, उसमें अगर बंदा या बंदी कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो सिर्फ उसकी बेस पे आर यू सजेस्टिंग दे शुड स्टॉप लिविंग विद ईच अदर? यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल भी होती हैं और हो भी सकती हैं, अट्रैक्शन भी हो सकती है, बंदा गलती कर भी सकता है, एक दो तीन चार उससे ज़्यादा भी गलतियां कर सकता है. हाँ हाँ. सो उसका सोल्यूशन इज, आई डोंट थिंक कि आपने उसको छोड़ देना. इसका तो फिर पाकिस्तान में एटलीस्ट एज फार एज आई कैन सी 90% ऑफ शादियां खत्म हो जाएंगी अगर सिर्फ इस तरह की बातों के ऊपर ही छोड़ना शुरू कर देंगे. तो आई थिंक में जो आप थोड़ा सा राना साहब कह रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें आ जाता है. एक थेरेपिस्ट है टेरेंस रियल, वो कहता है कि जो मर्द होते हैं सोसाइटी में, वो कंट्रोल करने के लिए, खवातीन को स्पेशली कंट्रोल के लिए करने के लिए फिजिकल वायलेंस यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट कम्स नेचुरल टू देम एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू डू दैट. एंड women, they use emotional violence, they use emotional blackmail, they use that because they might have more of a socially evolved emotional system that वो कर सकते हैं. जनरल बहुत broad generalization है, but if you think about that, once a man has erred, a woman has a certain power over that situation, which is कि वो बच्चों को भी use कर सकती है. She can also sort of, if you think about that in the larger context, एक खातून का एक larger family system में, joint family में, उसको ना इन-लॉ से इज्जत मिलनी है, ना उसकी उस तरह से पावर है फाइनेंसेस में. When the man has erred, she gets a certain power over that. So, I mean, जो उमेर कह रहा है, I would see that actually that stabilizes the system in some way, that now there is that, as much as a man has that sense of के अच्छा ये तो बात मेरी किसी तरह से मानी नहीं जाएगी, ये तो होएगी नहीं, तो मैं झूठ बोल के ही कर सकता हूँ. when there when there when their lie is caught for a woman, now she can have a certain power over that relationship too, that she can make either the man, like you said, कि उसे कंट्रोल कर सकती है, इधर जाना है इधर नहीं जाना, या हर जगह मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी. So sometimes sometimes this is also something that can be used to control. But this is used to control and this is payback. But Hmm. is this an authentic relationship? नहीं, Authentic and secure relationship? absolutely. That's what I was asking ना, कि देखिए अगर, क्योंकि राणा साहब आप जो पॉइंट कह रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ओवर. बट राणा साहब जो आप बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग अ हार्ड स्टांस. व्हाट आई एम आस्किंग इज कि देखिए एट अ सर्टेन पॉइंट यू आर एब्सोल्युटली राइट, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स, आप रिकंसिलिएशन करते हैं, आप की कम्युनिकेशन होती है, बल्कि बहुत दफा इस तरह भी होता है कि आपके कोई इस किस्म का हादसा होता है, या हादसा जो भी है, आप इंसिडेंट होता है, एंड कपल्स ऑन सम ओकेजन्स एक्चुअली कम आउट मोर स्ट्रोंगर. दे कम आउट अंडरस्टैंडिंग द अदर बेटर. जो झूठ उन्होंने छुपाए होते हैं एक दूसरे के बारे में, वो जब निकल आते हैं ना, तो या तो वो उन्हें तोड़ देता है या उन्हें मजीद जोड़ देता है. राइट. Hmm. अब बहुत कम इंस्टेंसेस होते हैं, अनलेस उनके अंदर इतनी ज्यादा, क्या कहते हैं, इमोशनल प्रोग्रेस, और उनके अंदर इतनी ज्यादा, क्या कहते हैं, सलाहियत है एक दूसरे की खूबियां पहचानने में, और अपनी क्या कहते हैं, जिस बुनियाद पे उन लोगों ने अपनी रिलेशनशिप की थी, कि उससे मद्देनजर रखते हुए दे एक्चुअली आर एबल टू बिल्ड द रिलेशनशिप मच स्ट्रॉन्गर आफ्टर whatever that incident, जिसके बाद जो है वो अब ज्यादा कॉन्शियंशियस हो गई कि बंदा गलत है, वो है. बट इन अदर सिचुएशन जहाँ पे ये चीजें रिपीटेड हो रही हैं, मैं उस पॉइंट पे कह रहा था कि अगर आपको पता है, मतलब कि आप ही की एग्जांपल ले रहा हूँ, कि अगर वो कह रही है ना तुम्हारे बाप को मुझे पता है वो ऐसे ही है, मतलब वो औरत अपने ऊपर भी जुल्म कर रही है, अपने बच्चे पे भी कर रही है, और क्या कहते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड वेरी रॉन्ग. कि मैं उसके ऊपर मैं जो थोड़ा सा अफसोस है कि अगर इतनी सही कह रहे हैं. चीजें, या तो यू सीक हेल्प, या तो यू हैव रिक्वेस्ट हेल्प एज वेल. यू नीड टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स. आई डोंट नो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सिचुएशन जो है ना, स्टेबल नहीं है. आई थिंक जो हमारा मौजू ओरिजिनल ये था कि ठीक है, अट्रैक्शन है और वो चीज एक्सपैंड हो जाती हैं, लेकिन वो किसी पॉइंट पे जो है ना, पीपल नीड टू स्टॉप एंड रियलाइज के अट्रैक्शन इज नेचुरल, बट इफ डिस्पाइट दैट
आपकी रिलेशनशिप के अंदर जो है वो बंदा कीप्स एक्टिंग अपॉन their attraction, या बंदी जो है she keeps acting upon whoever they're attracted to, that means the other partner is not really invested in your own relationship. आपस में जितना भी build कर लें, at some point it either will make it or break it, but where it breaks, वो आपको recognize करके then you have to stop it. That's where I guess I have hard stance कि at some point you need to decide कि नहीं यार ये अब relationship नहीं कर सकते. True. Hmm. मेरा इसमें एग्जांपल में जो थोड़ी डिस्कशन और साइड पे चली गई थी वो ये था कि उस खातून को अपने शोहर के बारे में जो कुछ पता था वो भी तो एक कम्युनिकेशन का रिजल्ट ही था ना. तो समटाइम्स वो जिसको कहते हैं ना टू मच इंफॉर्मेशन आप जब पास ऑन कर देते हैं तो दैट कैन आल्सो क्रिएट ट्रबल्स. दैट्स व्हाई सम पीपल कुछ लोग अपनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास ऑन भी नहीं करते. ये मेरा पॉइंट ये था कि उस बंदे ने, वी डोंट नो उधर क्या चल रहा था, हो सकता है क्या बैकग्राउंड था, फर्स्ट टाइम था, सेकंड टाइम था, या उनकी रिलेशनशिप ही ऐसी थी कि मिलके ही वो हंसी मजाक चल रहा था, आई डोंट नो. लेकिन मैं उसमें से पॉइंट एक ये भी निकाला कि आप उस पर्सन हु इज क्लोज लाइक मी कि अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा आउट ना करे. वो ये भी सोचेगा कि अच्छा मेरी ज़्यादा अगर मेरी शॉर्ट कमिंग्स या वीकनेसेस किसी को पता चलेंगे तो दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मी. तो कम्युनिकेट ना करने में एक ये भी ब्लॉकर होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं एज ए ओपन पर्सन या एज ए वल्नरेबल पर्सन पास ऑन कर रहा हूँ वो कल मेरे अगेंस्ट भी ना यूज़ हो जाए, क्योंकि शायद पास्ट में यूज़ हुई है. सो दैट्स व्हाई आई एम प्रॉब्ली वेरी स्केर्ड ऑफ इट. तो समटाइम्स कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन में ये भी एक रीज़न हो सकता है. जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, तो उसमें एक ब्लॉकर ये भी हो सकता है. हमें फील्ड ट्रिप के लिए अल्फता जाना चाहिए. इस कॉन्वर्सेशन का काफी सारा पार्ट उस, या अल्फता से कहते हैं स्पॉन्सर कर दे. वो वाला अल्फता बंद हो चुका है वैसे जिसकी मैं बात कर रहा खैर कर राणा साहब जो वहां चले गए थे. ठीक हो गया. मैं एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आता है. अगर जो अट्रैक्शन के हवाले से अगर आपने समझना है, लेट्स से एन इनोसेंट अट्रैक्शन, अगर आप लोगों ने मूवी जरूर देखी होगी, तो असीत ने तो मुझे पता है डेफिनेटली देखी है, वो रिचर्ड गियर की शेल्बी डांस जो है. मैंने भी देखी. ठीक है. आई थिंक अगर आपने इनोसेंट अट्रैक्शन समझनी है ना विद रिस्पेक्ट टू मेन, तो प्लीज वॉच दैट मूवी. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड अगर आपने थोड़ी सी जरा हल्की सी ग्राफिक मूवी है, बट अगर आपने चीटिंग, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड चीटिंग, देन आप, और वो आयरॉनिकली दूसरी मूवी भी रिचर्ड गियर की ही है, लेकिन अनफेथफुल जो है ना, इफ यू वॉच दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग एज वेल. कि उसमें जो है वो what brought, and incidentally it was a woman in this case, what brought her, Diane Keaton है शायद, anyways, so what brought her to a particular point where she cheated. जाहिर कुछ था, कुछ भी नहीं था ऐसा कोई, but what made her cheat. ये दो movies as a reference, I think you'll understand, and it's very sort of close to reality. अगर आपने उसको समझना भी है ना कि what makes certain people cheat and what makes somebody more attractive than your partner, despite it being seemingly an okay, somewhat secure-ish relationship according to you, but then not quite. इस टॉपिक पे एक इंडियन मूवी भी है जिस्म, वो भी आप देख सकते हैं. सेम मैसेज. बेशक मेरा ख्याल था जिस्म 2 के, लेकिन चलें जिस्म पे चलते हैं. पहले पार्ट 1 देख लें, फिर उस पे फिर उसके बाद पार्ट 2 पे जाएंगे. अब दोनों क्या पढ़ेंगे या क्या गंदी बातें प्रमोट कर रहे हैं? नहीं यार, हम गंदी बातें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं बातें जो कि अपीयरेंटली गंदी हो गई. जरा फर्क है उनमें. खैर ऑन लाइटर नोट, तो वो उमैर साहब एक लंबी आप अलग हो सकती है, लेकिन मुझे एकदम से ख्याल है कि इस टॉपिक पे जिस तरह से हम कह रहे थे ना कि एक सीमिंगली बहुत इंटरेस्ट है लेकिन एक ममानियत भी है, एक पब्लिक और प्राइवेट व्यू लोगों का बड़ा फर्क है. हम भी ऑब्वियसली कुछ चीजें वाइल रिकॉर्डिंग हम कहते हैं, कुछ जो है वी बोथ फॉर सम रीजंस ऑफ हाउ दे माइट बी परसीव्ड, या उतना टाइम नहीं हम नहीं कहते. एक और फैक्टर है दैट इसमें एक रूरल अर्बन भी काफी डिवाइड है, that this is also sort of promiscuity, sexuality, the number of partners is also sort of अगर rural urban divide है, class based भी divide है, that a lot of times what you would see is that in the elite class and in the lower classes
people might have multiple partners, which is, I mean, हम हमारे पाकिस्तानी context में घर के जो staff होते हैं, very frequently you would hear that, oh, my husband has run away with someone, या बीवी जो है किसी के साथ चली गई है. Suddenly you might hear that in the elite classes, but एक जो middle class और जो एक बीच वाला है, जो मिडिल क्लास मोरालिटी है, उधर ये बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक बात समझी जाती है. जबकि a lot of times in urban centers versus rural centers, it's a very in the rural culture, it might be a very common phenomenon कि एक घरवाली अलग होती है और बाहर वाली अलग होती है, या a large majority of people who are working actually are women in the fields, and they a lot of times are a lot more independent. It's actually empowered in some ways. Unfortunately उधर बहुत incidents of assault भी बहुत होता है. However, there are also those additional factors. एक जो intersectionality का perspective होता है कि एक generalization अगर हम बना देना, उसमें तो नजर ये आता है that it's just men who are doing it, और एक बस बहुत clear cut बात है कि एक attraction है जिसकी वजह से होती है, but बड़ी nuanced एक ये conversation usually होती है, अगर आप देखने के लिए willing हो, अगर ये conversation करने के लिए willing हो. इस पे एक लास्ट पॉइंट में एक ऐड करता हूँ. जी. I don't know, जैसे men cheat, all men cheat, या most men cheat. They're cheating with women. So how does that equate? वो Yeah. cheat किसी के साथ तो कर रहे हैं, तो वो is that person not so that person not cheating but the man is cheating. ये भी मुझे बाइफिकेशन जो है ना, वो आयरनी है जो कि मुझे पूरी तरह समझ नहीं है. बस वो एक बंदे को आपने लेबल कर दी कि वो गलत है. रिपीट करिएगा, मुझे सवाल समझ नहीं आया क्या. यार अब मतलब कि ये कह रहे हैं कि मेन चीट, पिछली एपिसोड में बात की थी, आज बात की है व्हाट मेक्स मेन चीट, और सारी में वाली बात कर रहे हैं, एंड हम बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज और फीडबैक और एवरीथिंग, यू नो, इसको शट डाउन करना, और मर्द गलत है और मर्द ने गलत किया है, या औरत ने किया तो औरत ने गलत किया. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस, बोथ ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, जनरलाइजिंग या जनरली. उसमें औरतें भी तो हैं जो चीट कर रही हैं. सिर्फ मर्द के ऊपर वो सारा क्यों आ रहा है कि मैन चीट एंड है देयरफॉर देयर बैड, और मैन ही चीट करते हैं और एक्चुअली मर्द ही चीट कर रहे होते हैं, बट दे चीटिंग विद समबडी. नहीं, लेकिन देखें, वो अगर आप इस केस की बात करें कि जिससे वो चीट कर रहा है उसको हम बुरा भला नहीं कह रहे, इसकी आप बात कर रहे हैं. लेकिन पहले इसमें नॉर्मली जो लोग, कोई भी बंदा कोई गुनाह कर रहा होता है, तो ये नहीं सोच रहा होता कि वो गलत काम कर रहा है. तो वो बोथ ऑफ देम यूजुअली उनके पास अपनी जस्टिफिकेशन है. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था शायद कि बोथ ऑफ देम हैव ए जस्टिफिकेशन के दे हैव. आदमियों के पास अजीबो गरीब सी होती है कि जो मेरी बीवी मुझे टाइम नहीं देती है, तो ये, और वो किसी ना किसी तरीके से वो लड़कियों को पटा लेते हैं, बेवकूफ़ बना लेते हैं. तो इसलिए जो है, आपने देखा होगा कि बहुत सी खवातीन जो हैं वो दूसरी शादी नहीं करती आदमियों से, क्योंकि दे थिंक के बाय डूइंग दिस दे आर ब्रेकिंग होम ऑफ अनदर वुमन. तो ये खवातीन के अंदर ये जो टैबू है, ये बहुत बड़ा है कि वो किसी का घर नहीं उन्होंने तोड़ना. लेकिन जिससे होम रेकर, एग्जैक्टली. तो ये जबकि अगेन ये ये रिसेंटली ये एक आइडिया आया. इससे पहले तो करते थे कितने सारी उम्र, सारी दुनिया आदमी कितनी शादियां करते थे. इस पे भी हम कभी डिस्कशन करेंगे. लेकिन ये जो पॉइंट है ना कि उस वक्त एट दैट मोमेंट, ठीक है, उनको ये काम गलत नहीं लग रहा होता, मोस्ट ऑफ देम, अनलेस के दे आर ओनली देयर फॉर सेक्स. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट के व्हेन दे हैव अ प्रॉपर रिलेशनशिप, इमोशनल एंड अदरवाइज, तो उनको वो काम गलत नहीं लग रहा होता. और दैट्स व्हाई. लेकिन अगर जब आप विक्टिम पार्टी से पूछेंगे, उसके हिसाब से तो दोनों ने गलत किया. वो सिर्फ आदमी को तो नहीं कह रही होती, वो दोनों की, वो तो अगली बंदी के घर भी पहुंच के औरत पे आता है. एक औरत जो है वो, बल्कि इट्स वेरी क्लीशेड दैट समवन हु इज बीइंग चीटेड ऑन, वो दे विल फाइंड आउट हु शी इज, दे विल गो एंड कॉल देम, गो एंड उसको बुरा भला कहेंगे कि मेरे मियां को बहकाया है. या a lot of times even if the husband is someone who's an active participant, they might believe that it's always the other woman who must have done something. तो अक्सर दोनों ही फंसते हैं. लेकिन ये है कि जिस जिस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पहली मार उसी को पड़ती है ना. मेरे केस में तो हमेशा सारी पकड़े गए. बर्बाद था पुराना सा. चलें जी, रैप अप करें. ठीक हो गया. एक कमेंट कौन देगा? रैप अप करना उमैर देंगे. उमैर कुछ उमैर ही देगा.
जरा जल्दी, हाँ जी। नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक हमने बहुत ज्यादा डिमेंशंस इसके साथ खोल भी दिए हैं इसमें. आई थिंक ये रिलेशनशिप्स एंड सॉरी स्पेसिफिकली के द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनफिडेलिटी. मुझे जो एक थोड़ी सीरीज नजर आ रही है, मे बी वी कैन टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम या आप लोग देख लेगा, बट मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए अट्रैक्शन को तो हमने थोड़ा सा कवर किया. आई डोंट थिंक वी वेंट टू मच डिटेल्स बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस जो हमारे उसके ऊपर डेफिनेशंस थी. बट the impact that this might have on your relationships, on children, on क्या कहते हैं society in general, this I find interesting. Maybe ये हम अगले सेशन के लिए हम रख सकते हैं. क्या ख्याल है आप लोगों का? जी डन. जी Let's सर. ठीक है, चले. All right, thank you all so much, and we will see you on the next one. And I feel कि हमारे बहुत सारी चीजें अभी open ended ही हैं. There's a lot more conversation on this, so I guess we will take it up next time. Thank you. Okay. Thank you जी. अल्लाह ने